Good morning students. Today we will study about lesson number 7, changing outer forces. In this chapter we will learn about what is weathering, explain its kinds with examples and to explain difficulties of land surface balancing. So students, the shape of the earth is not always same but it's keep on changing. यानी कि जो अर्थ का शेप और जो लैंड है वो हमेशा सेम नहीं होता पर उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग होती रहती है. सम ऑफ द फोर्सेस वर्क इन चेंजिंग इट शेप्स, यानी कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो इसके शेप को चेंज करते हैं. These forces are two types, internal forces and external forces. That's mean there is a two types of forces. First is internal and second is external forces. Internal forces form some of the new landform shapes, while executive forces work in changing the shape. जो internal forces होते हैं वो न्यू लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करते हैं और जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो शेप को चेंज करने में मदद करता है. In the previous lesson we have learned about internal forces. Now in this lesson we will study about the external forces. There are two types of external forces. First is those which weaken in the rocks at its place to break them, and the second which is shift these pieces of rocks from other original place to take them to lowlands. Rivers, winds, underground water, glaciers and sea waves are the second type of the external forces which play an important role to changing the shape of the landforms. यानी कि landforms का जो shape change होता है उन सब में ये important role play करते हैं जो external forces होते हैं. The first process of these is called weathering and the second is erosion cycle. और इसकी जो प्रोसेस होती है उसे जो weathering कहा जाता है और जो सेकेंड होता है उसे erosion cycle कहा जाता है. Now next is weathering. Now we talk about the weathering. What is weathering and explain with its examples. Weathering. Weathering is a kind of process in which rock slips break at its own original place. Mainly weather and season affects the slips of rocks. Temperature, rainfall and fog and snowfall are the main factors of the season. So these forces are also called the season weathering forces. यानी कि वो सीजनिंग फोर्सेस जो रॉक्स को टेम्परेचर और रेनफॉल और इन सब क्लाइमेट कंडीशंस के कारण उस पर जो प्रेशर आता है या फिर उस पर जो लोड होता है जिससे उसका शेप चेंज होता है उसे वेदरिंग कहा जाता है और सीजन्स के अकॉर्डिंग उसमें सीजन वेदरिंग उसे कहा जाता है. As soon as the rocks come into the contact with the weather, यानी कि जैसे जैसे वो वेदर के कांटेक्ट में रॉक आती रहती है then weathering starts और उसकी वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाती है. Each rock has some store of minerals in and it helps to chemical reaction. जो हर रॉक्स जो होती है उसमें कहीं ना कहीं मिनरल्स रहता है और वो केमिकल रिएक्शन में हेल्प होती है. Breaking of rocks takes place due to changing in temperature and pressure of heat. Look at the picture and see how the rocks break and there gets collected at the some place due to gravitational force. Breaking of rocks takes some place due to change of temperature. यानी कि टेम्परेचर के चलते जो रॉक्स में चेंजेस हुए हैं जो उसका टूटना हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. यानी कि जो रॉक्स होती है वो किस तरीके से ब्रेक होती है और किस तरीके से वो हील्स में चेंज होती है या उस पर जो प्रेशर्स होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं. Rocks expand in the day temperature and shrink suddenly at the night due to the fall of temperature which results the crust of rifts. यानी कि जो रॉक्स होती है वो
दिन के समय में जब टेम्परेचर होता है तब वो एक्सपांड हो जाती है, और जब सडनली टेम्परेचर डाउन हो जाता है नाइट टाइम में तब वो सडनली श्रिंक हो जाती है। इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। द वेदरिंग ऑफ द रॉक इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस होती है मैकेनिकल प्रोसेस कहलाती है। एंड वाइल ऑफ द इरोजन प्रोसेस इज रॉक्स केमिकल चेंजेस, यानी कि जो इरोजन प्रोसेस होती है वो केमिकल और केमिकल चेंजेस में आती है। मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स आर इन द रॉक दैट एट फर्स्ट देयर रेंज some of the minerals get the flow. Some of the minerals change in form of these way. Weathering and erosion process of nature continues at on place. This process is called weathering. In this process, the season also play an important role, and therefore it is called season weathering also. और इस वेदरिंग को होने में सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए से सीजन वेदरिंग भी कहा जाता है। नाउ वी रिमेंबर अ पॉइंट, वेदरिंग इज अ लोकल प्रोसेस इन विच, यानी कि जो वेदरिंग है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि स्लिप्स ऑफ द रॉक्स, जो रॉक्स होती है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर देती है। Now we talk about the types of weathering. Types of weathering. First is there are three kinds of weathering. First is physical weathering, second is chemical weathering, and third is biological weathering. So students, we discuss about physical weathering. Physical weathering, the discretion of rocks into the 20 pieces by mechanical प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। जो फिजिकल वेदरिंग होती है वो केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो रॉक्स होती है वो पीसेस में डिवाइड हो जाती है। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द रॉक्स एक्सपैंड, एंड व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स sharply then the rocks convert. These experience of construction of rocks, lands and tension and creates a series of cracks or to join in the rocks, stripping them into blocks. This is known as block, यानी कि ये जो है वो ब्लॉक प्रोसेस कहलाती है। Some rocks are not good conductors of heat. जो कुछ रॉक्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर, हीट की गुड कंडक्टर नहीं होती है। Some of the rocks are not good conductor of heat, यानी कि कुछ जो रॉक्स होती है वो हीट की गुड कंडक्टर नहीं होती है। The expansion of creation for is more the outer layer than the inner one. The outer layer of the planet of more and main marks of the rocks in the form of shales, यानी कि जो फॉर्म होता है इसका रॉक्स का वो चेंज होता है। This is just like paring of the onion, and the upper layer of the round rocks turns into powder. ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है कि ये बिल्कुल ऑनियन की लेयर्स की तरह होता है, और ये जो रॉक्स होती है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है इस प्रोसेस में। नाउ वी टॉक अबाउट केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, ड्यू टू द केमिकल चेंजेस लाइम्स and sulfur and salt rocks melt into the water. Now we talk about chemical weathering. Due to the chemical changes, lime and sulfur salt rocks merge into the water and disintegrate, melt to get rough. Thus, the rocks lose in originality and either gets dissolved with the water or become powder and gives birth to a new minerals. यानी कि
जब रॉक्स जो होती है वो अपनी इस प्रोसेस में रॉक्स जो होती है वो अपनी ओरिजिनिटी खो देती है और वो डिज़ोल्व हो जाती है और एक पाउडर के फॉर्म में आ जाती है और उसी तरीके से न्यू मिनरल्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड द केमिकल वेदरिंग. द मोशंस एंड रेन प्ले अ वाइटल रोल इन इट. यानी कि जो मोशन होता है और जो रेन होती है वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. Now, biological weathering. Biological weathering caused due to the activities of vegetation, animals and human beings. The roots of tree enter in the cracks of rocks and split them, break up. यानी कि जो रॉक्स के क्रैक्स होते हैं उसमें जब ये वैदरिंग या फिर वेजिटेशन या ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एनिमल्स के द्वारा जब उन रॉक्स को फिलिंग किया जाता है तब वो जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग में कन्वर्ट होता है. एनिमल्स लाइक रैट, ants and earthworms and others also contribute in this process to breaking and filling. The human beings also break up rocks for farming and house activities and buildings and road making. In this process is known as biological weathering. जो human activities होती है जब हम आपने देखा होगा कि जो वैलीज होती है या फिर कुछ माउंटेन्स होते हैं जहाँ पर रोड्स हम देखते हैं या फिर हाउस बनाने के लिए ब्रेक करना, ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो भी बायोलॉजिकल वेदरिंग का कारण है. सो वी रिमेंबर दिस पॉइंट. अपार्ट फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन soil formation because the small rocks particles make up in the soil. और यही small particles जो होते हैं वो soil formation करने में helpful होते हैं. Now we talk about erosion cycle. It is a very important topic for you and diagram also. So the changing outer forces also work along with weathering. जो outer force होता है वो work करता है weathering के साथ. So the continuously laying the make of the surface well, these forces also work from weathering. The transportation of deposition in these called erosion cycle. Rivers, glaciers, winds, underground water and sea waves are the key agents of living. यानी कि जो वाटर होता है, जो सी वेव्स होती है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. The surface living can be classified into the two categories: slow wasting and rapid wasting. The rapid erosion cycle shifts the rocks from the original place by rubbing, cutting, peeling, so that hard washed areas generally decreased. The process is called slow wasting process. यानी कि इसी को ही स्लो वेस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है. द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द ब्रोकन और अनब्रोक्ड मिनरल्स अंडरग्राउंड. द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एंड ब्रोकन और अनब्रोकन मिनरल्स डाउनलोड इन कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग the broken and unbroken minerals download its transportation. The process of deposition and weather minerals in low-lying regions or holes is called aging. Aggregation. As long as the weathered minerals falls in the hole in the height keeping on growing, this process called the high wasting